Yes, Shadab has asked this question. इसका solution देखो. What is the given line? 5x plus 4y is equal to 50. Distance from the origin to the point. Basically, it is in that cuts the x-axis. Cuts the x-axis. Cutting the x-axis का मतलब y is equal to 0, isn't it? Cuts the x-axis is nothing but y will be 0. ठीक है. So if you substitute y value 0 from, let us say this is my star equation. मतलब स्टार इक्वेशन मुझे क्या मिलेगा? 5x इज इक्वल 50 बेटा, x इज इक्वल कितना बेटा? 10. समझा? समझा? Alright, so what is my x comma y coordinates now? I got it. Point is what? Point of intersection, which means like how much? 10 comma 0. मुझे क्या चाहिए देखो? Cut the x axis. Cut the axis of x is options. Can you please give me the option? What is the question actually? I mean options. Options are 9 units, 8 units, 6 units, or 10.5 units. Option 9, 6, C, 8 हाँ, and 10.5. 10.5 यूनिट्स. देखो मुझे कहाँ से? ऑरिजिन से ना. देखो डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन. ऑरिजिन ये पॉइंट का डिस्टेंस निकालो फ्रॉम ऑरिजिन. कितना मिलेगा? दैट इज व्हाट योर आंसर इज गोइंग टू बी. हाउ मच यू गेट? सॉल्व दिस. सॉल्व करके Sir, बताओ it should be जल्दी. 10, right? हाँ 10 ही है तो. हाँ 10 स्क्वायर 100. तो 10 स्क्वायर 100. हाँ 10 विल बी द आंसर, बट ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल. I think the options are wrong. ऑप्शंस आर रॉन्ग. इट शुड बी द ऑप्शन. ये नहीं होना चाहिए. ये लिख लो. समझा? The only thing what you need to understand here is shut up. आया समझ? Yes, sir, I understand. Excuse me. My goodness. This is cutting the x-axis, which मतलब x-axis को कट करने वाली का इक्वेशन y is equal 0. सब्स्टिट्यूट करो x का कोऑर्डिनेट पाओ x कामा y 10 कामा 0. डिस्टेंस फाइंड आउट करो फ्रॉम ऑरिजिन से. डिस्टेंस दैट इज व्हाट आई गॉट 10 यूनिट्स. ठीक है. तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए आपको. Two jet planes leaving an airport one after the other. So after moving on runway, one flies due north and other flies due south. The speed of the both aeroplanes is 400 km per hour, 500 km per hour respectively. Considering PQ as a runway and A and B are any 2 points in the path followed by the two jet planes. ठीक है. So answer the following questions. So everyone solve this question. देखो डायग्राम दिया है इधर. So find the tan theta if APQ is equal to theta. That is a runway. We have to find out tan theta. APQ is equal to theta. What is going to be the answer? Pick. Last 10 seconds. 3/5. 3 by 5. 3 by 5. 3 by 5. देखो E has given APQ is equal. If APQ ये थीटा है तो tan थीटा क्या होता है? Opposite by adjacent. 1.5 by 1.5 by 2.5 कितना होगा भाई? 15 by 10. तो into 15 by 10 into 10 by 25. So 5 3 by 5. Option D is correct. How many of you got this? Guys, very simple. I got it, sir. Very simple. Next question. ये देखो क्वेश्चन देखने में क्या कुछ कुछ दिया. आप क्वेश्चन देखने में थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है. ठीक है. देखो क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत सारा सिंपल क्वेश्चन. फाइंड कॉट बी. कॉट बी के लिए मुझे tan थीटा चाहिए. व्हाट इज tan थीटा? मुझे पता है 3/5. तो 5/3 उल्टा इसका रेसिप्रोकल. सो कॉट बी इज आस्किंग बेटा. कॉट बी केयरफुल. ओहो देखो गलती मत करो. कॉट बी का मतलब मुझे क्या चाहिए? कॉट बी का मतलब क्या होता है? देखो
बी, हाँ cot b का मतलब tan b is opposite Yes, sir. by It should be 6 adjacent, by 5. adjacent by Adjacent by opposite. adjacent by hypotenuse, तो मुझे क्या मिलेगा 3 by 2.5, so 3 30 by by 25, 2.5. 3 by 6 by 5. 6 by 5, option B is going to be correct. ठीक है, then tan ये फाइंड आउट करो इधर, tan ये tan ये फाइंड आउट करना है, तो मुझे क्या चाहिए, एंगल देखो, tan ये फाइंड आउट करना है तो 2.5 डिवाइडेड बाय 1.5 कितना मिलेगा 25, so 5/3, ऑप्शन सी इज 5 करेक्ट. by 3. सिंपल 5 क्वेश्चन, by 3. थोड़ा देखो डायग्राम को समझो, एंगल इधर उधर घूमता रहता है. ठीक है, सीकेंड का tan ये तो मुझे पता है, तो सीकेंड ये क्या होगा, देखो 1/3 कॉमन सेंस, सीकेंड ये नहीं, सीकेंड ये थोड़ा, सीकेंड ये क्या होता है, cos ये तो एडजेसेंट बाई हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस बाई एडजेसेंट होता है, तो मुझे क्या लिखना है एपी बाई, देखो ये You वाला need चाहिए to मुझे, use Pythagoras theorem यस and find पाइथागोरस थ्योरम, AP तो first. x बाई क्या होगा, x बाई, हाँ मुझे एपी X लुक square is equal to 1.5 square plus 2.5. हाँ, x स्क्वायर इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ, नॉट स्क्वायर, x इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ, तो 1.5 होल स्क्वायर प्लस 2.5 होल स्क्वायर, तो x इज इक्वल 1.5 स्क्वायर का मतलब कितना होगा 2.25, 225 ना, तो 25 मतलब 6.25, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 9 ना, 9 ना 8.5, अरे यार 8.5, 8.5 का मतलब एंड डिवाइडेड बाई 1.5 है ना, तो डिवाइडेड बाई 1.5, तो x का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 8.5 हाउ मच, स्क्वायर रूट ऑफ 8.5 हाउ मच, 8.5 तो 9 मतलब 2.9, अच्छा 2.9 नहीं, अप्रोक्सीमेटली 3 मिल जाएगा मुझे, 3 ले लेंगे हम लोग, why because he has given, look at this, everything not, everything not in decimal, so he has given proper number, all right, not in decimal guys, he has given integer, so this is what my x value, which I got 3 here, which I got 3 here, ठीक है, ये 3 मिल गया है मुझे, तो secant ये मतलब क्या होता है, hypotenuse by opposite, Sir, sorry hypotenuse by adjacent. adjacent by, हाँ, तो 3 by, what is the answer, 3 by something, 3 option by 1.5 is equal to 2. 3 by 1.5 is equal to 2, yeah 1.5 1.2, 3 by 1.5, 3 by 1.5, तो मुझे मिलेगा डेढ़ दोस, isn't it, तो 2 गुना, which is option B is going to be correct, option B. So next, find cosecant B, cosecant B, तो साइन का उल्टा, साइन क्या मिलेगा मुझे, फाइंड फर्स्ट वाई वैल्यू, ये वैल्यू फाइंड आउट करो, टेल मी व्हाट इज आंसर, क्विक, लास्ट क्वेश्चन, मेक इट फास्ट, डायग्राम देखो, अरे यार देखो बीपी बाई, which one is asking, कोसेक बी, तो कोसेक बी का मतलब क्या होता है, साइन बी का मतलब ऑपोजिट बाई हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस बाई opposite, y value, find out what is the y value here, make it fast, are you guys here, hello, can you hear me, Yes, sir. yes make it fast, क्विक, आप कैलकुलेशन, ये छोटी छोटी कैलकुलेशन को इतना देर नहीं लेना चाहिए,
Y, what is the Y value? Pythagoras theorem. अरे यार देखो cosec 1 second, let me look at the question. ऊपर से नीचे हो रहा है. हाँ देखो Sir, cosec it should be 4 by BP. देखो y by hypotenuse by opposite. y by PQ. Y So is 2.5. 4. So y is 4. So y by 2.5. So what is the y value? How much? 4 you got? 2.5. Yes, sir. देखो कितना होगा? 25. 8 by 40. 5. हाँ 5 8 by 5. 8 by 5. Option B is going to be correct. Yes, any doubts? बेटा फर्स्ट y को फाइंड आउट करना चाहिए आपने. ये y को y, how can I find this y? Applying Pythagoras theorem. Very simple. Yes, this is what the today's session is all about. So probably yes, next class what you want me to solve actually? What do you want me to teach? Yes, thank you. Tell me, what do you want me to teach in the next class? Sir, can we do geometry? Sorry? Can we do triangles or areas related to circles? Areas related to circles already we have solved the doubts as well, but what are the doubts you have from that? We'll solve, no problem. After this, guys, when is your exam? December 4th, right? Yes, sir. 4th मतलब हमारे पास और कुछ बाकी 19 days है. ठीक है, 19. So every day will be solving for your term 1. Every day will be solving the questions of term 1. term 1 के लिए तैयारी अब से शुरू करेंगे हम लोग. ठीक है, आ रहा है समझ? Getting my point? So hereafter every day we'll be solving questions related to term 1, also term 2. Simultaneously we'll go half an hour that session and half an hour this. Would it be fine? Is it fine with everyone? Hello. Okay, sir. Yes, sir. I need a response from each and everyone. See, if you have any kind of suggestions from your side, also you are like welcome to suggest. Tell me. Yogesh, what do you say? Amrita, what do you say? Shut up. What do you say? Yes, sir, it's okay for me. What about Yogesh? I think he is not here. What about you? Shut up. Sir, it's your choice. You can go ahead with whatever you want. Sorry? You can go ahead with whatever you like. Acha, so you are fine with whatever the plan which we go Yes, for? sir. I'm fine with anything. Cool, great. So yes, so we'll see as your exams are nearing by, so I just planned that in 19 days we'll solve all the chapters and all type of questions. Okay, different type of questions. I just got like plenty of questions. We'll just have a look at those questions. Okay, देखो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है. This I bought this Kindle version. So we have so many questions. We'll solve all these questions. All right. Okay, sir. Yes, sir. Thank you. So let's retire. We'll meet in the next session. Goodbye. Thank Thank you, you. sir. Thank you, sir. Bye.